Bismillahirrahmanirrahim. This is our first lecture on Laplace transform for the students of physics 4th semester. First we will define the Laplace transform. Laplace transform mung define ko tasawuray let f be a function defined for t greater or equal to 0. f जब सरे वो फंक्शन दे चिदा को डोमेन t बांधे डिफाइन शवे दे t बांधे कंडीशन दे t greater or equal to 0. Then the integral. This is the notation of Laplace of f of t. Laplace of f of t will be equal to integral from 0 to infinity. This is definite integral. Integral from 0 to infinity e power minus st f of t dt is called the Laplace transform of f, provided that the integral converges. Laplace transform का तो स्पदे फार्मूला मालूम है कंडीशन दादे तो मुसना चिदाला इंटीग्रल कन्वर्ज कीगी का फर्स्ट है इंटीग्रल न कन्वर्ज कीगी नो द फंक्शन ब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ने एग्जिस्ट कीगी ये डेफिनेशन तब या हो रही का फर्स्ट है हम सरे वो फंक्शन ही f of t for t greater or equal to 0. No, then this integral from 0 to infinity e minus st f of t dt is called the Laplace transform, provided that this integral converges, this integral exists. If does not exist this integral, then the Laplace transform of the function will not exist. So this is the definition of Laplace transform. Now we are going to start some examples. Laplace transform of the function f of t can be denoted as, similarly, shortly we are going to denote the Laplace transform of f of t with this, with the capital F. यह खबर याद हो साथ ही कि फंक्शन नोटेशन में हम स्मॉल यूज करो द लाप्लास ट्रांसफॉर्म नोटेशन में हम कैपिटल यूज करो f of t स्मॉल यूज दे फंक्शन दे g of t फंक्शन दे y of t फंक्शन दे खुदा दे लाप्लास f of s g of s and y of s तब कैपिटल में यूज करो द्विमा का वरदान उठ गई कि फंक्शन गिवन दे t फॉर्म के फंक्शन डोमेन t फॉर्म के दे वो कहता है लाप्लास डोमेन तो गई लाप्लास दूसरा फंक्शन अब sv कम गिवन फंक्शन ची दे द कम फंक्शन ची मंग लाप्लास फाइंड करो द दे डोमेन में पर t फॉर्म की ची कल लाप्लास फाइंड ची कल ट्रांसफॉर्म ची नो ट्रांसफॉर्म फंक्शन बजाम सरा s फॉर्म की फॉर एग्जांपल कैलकुलेट द लाप्लास ऑफ 1 सो वी यूज दिस डेफिनेशन लाप्लास ऑफ 1 चे मुंगा फाइंड करो द डेफिनेशन दस यूज की इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e minus st f of t बजे तासु पुट के 1 जका चीज हम सरा फंक्शन given the f of t1 constant function दे उस्ताजों को रही integral from 0 to infinity e minus st dt integration find करी the e minus st integration e minus st divided by minus s this is the integral of the e minus st and the limits are from 0 to infinity minus 1 over s e minus st from 0 to infinity. Now you are use limits minus 1 over s e minus s
into infinity. The t पे जाएगा infinity put करा पड़ी e minus st की. Similarly, minus e minus s into 0. The t पे जाएगा put को 0. Upper limit minus lower limit. So minus 1 over s e minus infinity e power 0 minus 1 over s e 1 over e power infinity e minus infinity ने चक्का तलाश किया बस लाने डिनोमिनेटर तलाश किया पॉजिटिव शी अब e power 0 तो 1 बराबर दे तो उसका पता नहीं everything power 0 is equal to 1. So next minus 1 over s 1 over infinity minus 1 e power 0 is equal to 1. E power infinity the infinity बराबर था याद सकते 1 over infinity 1 over infinity is equal to 0 minus 1 over s 0 minus 1. So minus 1 over s into minus 1 will be equal to 1 over s. This is the Laplace transform of 1 which is equal to 1 over s. याद सकते हैं the Laplace transform the 1 the 1 over s बराबर the formula बस सर याद सकते हैं. Next example ले Laplace of t का फर्स्ट जरा फंक्शन द t बराबर ही बता सो फाइंड कहीं Laplace of t. Integral from 0 to infinity the integration definition use करो the Laplace transform definition use करो. Integral from 0 to infinity e minus st the f of t put कहीं t जैसा कि फंक्शन का मतलब f of t the t बराबर है into dt this is equal to t first function वाले e minus st second function वाले use के integration by part संगे use को first function integration of the second function. So integration of the second function you have already calculated minus derivative of first function. So the t derivative was राशि 1 by राशि with respect to t. Integration of the second function e minus st divided by e minus s. Next कतासु को रे first term चिरे कपदे कमंगा infinity put को नुसंगा चमंगा माके calculate लो द देना बदम सर 0 राजी रे e minus st divided by s दा कपा lower limit कमंगा 0 पुट को नो t पर प्रोडक्ट के लिए ब्याबा हम 0 राजी दो टर्म्स किया कैलकुलेट कोई 0 राजी मतलब तम 0 पुट को और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी द दे दोबारा इंटीग्रेशन ने नो माइनस प्लस 1 ओवर s वाले से क्यों लिखो और दामे इंटीग्रेशन वो लिखो ऑफ e minus st. This integration is the Laplace transform of 1 which is directly the transform of 1. Now the integration was it as Laplace upon put गई Laplace upon you have already calculated which is equal to 1 over s. So 1 over s into 1 over s 1 over s square. So this is the Laplace transform of the function t. So this is our first lecture. In this lecture we delivered definition and two examples of Laplace transforms.